नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी नए ब्रांड न्यू फ्रेश कमाल धमाकेदार एपिसोड में। गाइस, आई एम हियर एट द OnePlus Boulevard और मैं यहाँ पे 1 साल पहले आया था, आई मीन लास्ट ईयर, जब ये जस्ट शुरू ही होने वाला था एंड मैंने आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाया था। एंड अगेन आई एम बैक हियर। आज हम करने वाले हैं OnePlus पॉपअप में एक कम्युनिटी मीटअप। तो मतलब मिलने वाले हैं OnePlus कम्युनिटी मेंबर्स से, स्टोर पर सब देखते हैं और डिटेल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। Technical Guruji here. Amazing guys, we are all set for witnessing the shape of power. अंदर बस स्टोर ओपन होने वाला है और उसके बाद में लेट्स गो इनसाइड एंड सी हाउ इज स्टोर तो पहले देख ही चुके हैं बट दोबारा देखने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है और इंटरेक्शन भी होगा, लाइव अनबॉक्सिंग भी होगी। एवरीवन सेट हियर, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर OnePlus के नए प्रोडक्ट्स इन द न्यू OnePlus Boulevard। कम ऑन। You got the first one. First time coming to the store? Doesn't look like a mobile store. No. Looks like a museum. Which color? Green color. Green color, 16 GB? Yeah. So guys, right now I'm here with Naresh bhai and I remember sir. My memory is very strong. So ये सुबह 4 बजे से यहाँ पे थे and he is officially the first one in India to buy the OnePlus 11 and he got 16 GB green वाला variant. We have one phone over here, एक इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. We have so many phones. अभी मैं just waiting for total 11 phones और हम उन सबकी एक साथ unboxing करेंगे. So guys, we are ready and we are ready with the 11, the first 11 customers of the all new OnePlus 11. You guys excited for the unboxing? Yes. Yeah? Let's do it. Yeah. What do I say before we start? Never settle and before we peel, I'm gonna say चलिए शुरू करते हैं. So guys, do the honors. तो गाइस यहाँ पे ना OnePlus Boulevard में इतना कुछ करने को है कि फील नहीं होता कि ये मोबाइल स्टोर है यार। मतलब देखो ऊपर का जो ये जोन है, इट लुक्स लाइक अ रेस्टोरेंट, इट लुक्स लाइक समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। अंदर अभी हम जाने वाले हैं और हम एक कम्युनिटी मीट करने वाले हैं। नीचे से सब लोग जो हैं ऊपर आएंगे, हम बातचीत करेंगे। और मजे की बात, इफ यू लुक एट दिस, द काउंटर फॉर चेकआउट, I love how the computers are, integrated in the tables. I mean, they look really futuristic, or in fact, this store looks futuristic. यार, it doesn't look like a normal smartphone store. और मजे की बात, अभी we're gonna count, अभी unboxing तो हमने कर लिया है 11 OnePlus phones का। नीचे यहाँ पे सारे के सारे OnePlus 11 हैं, नीचे भी बहुत सारे हैं। We're gonna count how many OnePlus 11 phones are on display in the OnePlus Boulevard. और उसके बाद में ना, ऑल्दो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, बट वंस वी आर डन विद एवरीथिंग, आई विल गिव यू अ क्विक रन of the entire store and show you some secret features of this store. So basically, we are here for this. The
OnePlus Community Meetup. It's a good feeling here. It's good to talk to all of you, for example. If I were not a creator, I would not have been sitting here maybe. Is there anything in the recent times that has surprised you that, man, this I didn't expect from this company on this phone? If you just think from a different perspective, the smartphone itself, it's a barrier. Just imagine a future 10 years from now wherein there's no smartphone. The hype around OnePlus is that you can't just go and walk, and just buy the phone. You have to have an invite system. 7 Pro, because it came in with, I think, the first phone of OnePlus with a 90 Hz display, with a full screen experience, the pop-up camera. And the pop-up camera, why? Because at times, I'm very paranoid about, privacy. After you decided that you want to be the number one tech, or not starting with number one, be in this game, or Namaskaar Dosto consider that you are in the world and talking to people of tech. I know that I can't sing, I can't dance, I don't have any of these special abilities, but I can talk. And I love technology. So I studied technology, I did my master's in microelectronics from BITS Pilani. So all that happened, and I was like, यार चल एक काम करता हूँ, मैंने जो कुछ सीखा है, if I can kind of package it in form of a video and post myself, because I used to watch a lot. So मुझे लगता था कि यार मैं देख रहा हूँ and it's good to have the experience, but can I do something myself? That's how it all started in 2015. Never thought of कि इतने views आएंगे, never thought of कि subscribers हो जाएंगे, never thought of anything bro. Started as a hobby, even today it's a hobby. हम यहाँ बैठे हैं, Jivika is saying just one more question. मैंने उसमें breakfast नहीं किया है, अभी lunch भी पता नहीं कब करूँगा. But I have this passion. If you are ready to sit here, we can talk for 10 hours. So someone who's just starting out with content creation, how do they navigate the saturation, or how do they decide which platform? It's never too late, number one. Number two, don't think much, just do it. And we'll take a photo from here. So guys, OnePlus Boulevard में जो चीजें हैं at showcase, they have their own TV zone. It's kind of a living room experience. ऊपर उस तरफ जो है वो gaming का भी zone है. यहाँ पे we have all the 11s. By the way, which one do you pick? आपका Eternal Green या Titan Black? मेरे को बताना नीचे comments में, because मैं यहाँ पे देख रहा था कि green जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, and everyone going for the green, but at the same time there are fans of black as well. तो आप किसको pick करोगे मुझे बताओ? No, for a fact we have this all new OnePlus pad. And it looks very polished, to be honest. जो ये curves है ना, this unibody design is, I think it is a good aspect ratio of 7:5. And we have the new buds as well. The buds, guys, I'll tell you a secret. OnePlus ने, and of course, as with any other store, अपने सभी products को जो है वो attach किया केबल से, but buds, ये तो अंदर ऐसे पड़ी थी. And मजे की बात पता है क्या है? यहाँ पे with all the phones, we have this, which is, the interactive display telling us about all the details of any phone. इस phone के specs क्या हैं, which is quite cool. You go here, you go here, you go here. This is OnePlus Nord. So, and this is good because it's all, of course secured, but wirelessly. So, it's easy to, hold the phone and experience it. So guys, the experience at the Boulevard has been complete, full of excitement.
completely packed with full of energy. और यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं, everyone's here, super excited नए फ़ोन के लिए, नए फीचर्स के लिए, और I mean बहुत ज़्यादा मज़े का सीन था. Last 3-4 hours they have been really exciting. I really look forward. मैं वापस आ जाऊँगा. Who knows with the launch of the next OnePlus, maybe 11T or 11 Pro or 12 or whatever is coming next. I'll try to be back. Whatever. as given by the history of OnePlus, we all can make assumptions guys कि next क्या आने वाला है. लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब I think if you are in Bangalore, this place is a must visit. Even if you don't want to buy a phone, just come and experience, because the way it's done, ये बहुत यूनिक है. एंड वीडियोस हमारी बहुत यूनिक होती हैं, तो लाइक शेयर करना मत भूलना. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.